වගේ මුලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6 දක්වා ඉලෙනවා නේපාල කණ්ඩායමේ. එවර සාර්ථක පාරක් බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයාගෙන් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව බංග්ලාදේශයෙන් නැවතත් පෙරමුරට ලකුණු 7ක් ලබාගෙන නේපාලය තාමත් ලකුණු 6යි. ස්මයිල් හුසේන් සූදානම් පන්දු පිරිනැමීමට. එවලත් නේපාලයෙන් ඉතා ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් නේපාලයේ අංක 4 සිට සමත් බණ්ඩාර ඉතාමත් හොඳ සටන්කාමී ක්‍රීඩාව ලෙස පෙන්වුම් කරනවා. සාර්ථක වලකනවා නේපාලයේ ප්‍රහාරය නැවතත් සාර්ථකයි. ඔහුගේ ප්‍රහාර බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට නවක් ලැබීමට හැකිව ප්‍රහාරයක් නොවේ. ඒ සමගින් නේපාලයේ ලකුණු 8යි බංග්ලාදේශයේ ලකුණු 7යි. එවර නේපාල කණ්ඩායමට ලකුණු බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සිය ජයග්‍රහණය සැමරුවත් නේපාල කණ්ඩායමට හිමි වූ ලකුණක් බව විනිසුරුවා සඳහන් කරනවා. සිය කණ්ඩායමේ මානසික ඉහළ නැගීම සඳහා ලබා ගන්නා තාක්ෂණික විවේකයක් නේපාල කණ්ඩායම ලකුණු 9යි බංග්ලාදේශයේ ලකුණු 7යි. නේපාලයේ ලකුණු 2කින් පෙරමුණේ සිටිනවා. එවර නේපාලයේ තවත් සාර්ථක පාරක් 10 වන ලකුණ වාර්තා කරනවා. ඔවුන් බංග්ලාදේශයට ප්‍රබල පිළිතුරක් ලබා දෙනවා. කඳුළු පාන්දුවට ඉතාමත් හොඳ ඩෑෂ් පාරක් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. නැවත තම හොඳ වලකාලීමක් නේපාල ක්‍රීඩකයාගෙන් අංක 4 ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් සියල දස්කම් පෙන්වුම් කරනවා. ඉතාමත් හොඳ වලකාලීමක් බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව නේපාලය ලකුණු 11යි බංග්ලාදේශයේ ලකුණු 7යි තාමත්. තවත් හොඳ පන්දු කොට ගැනීමක්. නේපාල ක්‍රීඩකයා සටන්කාමී ක්‍රීඩාව ලෙස පෙන්වුම් කරනවා තරගයේදී. එවරත් නේපාලයේ සාර්ථකයි. 12 වෙනි ලකුණ වාර්තා කරනවා නේපාල කණ්ඩායම බංග්ලාදේශයේ තවමත් ලකුණු 7ක් පමණයි. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා මෙම නේපාල කණ්ඩායම.
එවර බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සිය පසුබෑම අවසන් කරමින් ලකුණක් වාර්තා කරනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව නේපාලයේ ලකුණු 12යි බංග්ලාදේශයේ ලකුණු 8යි. Up to now Nepal leading the tally the 12-8. එවර ලකුණ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට බංග්ලාදේශයේ 9 වන ලකුණ වාර්තා කරනවා. බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයා එල්ල කරන ප්‍රහාරය නේපාල ක්‍රීඩකයාගේ ඇඟිලි තුඩවලදී ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට ගමන් කිරීමෙන් එම ලකුණ බංග්ලාදේශයට. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13ට 9යි. නේපාල කණ්ඩායම ලකුණු 13යි බංග්ලාදේශයේ ලකුණු 9යි. තවමත් තරගයේ පෙරමුණේ පසු වෙන්නේ නේපාල කණ්ඩායම. එවරත් නේපාලයෙන් තවත් ප්‍රබල ප්‍රහාරයක්. ඔවුන් දිගටම මේ පෙර ප්‍රහාර එල්ල කරමින් සිය ලකුණු සංඛ්‍යාව එළනවා. දැන් ලකුණු 14ක් දක්වා එළඹලා තිබෙන්නේ. නේපාල කණ්ඩායමේ ප්‍රහාරයන් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට වැළැක්වීමට හැකියාවක් පමණක් නැහැ. ඔවුන් දිගටම ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. සමගින් නැවතත් කෙටි විවේකයක් ලබා ගන්නවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ. මධ්‍යම ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් සූරතාවය අද ආරම්භ වුණා කොළඹ සුගතගස ක්‍රීඩාංගණයේදී. තරගවල ආරම්භ කරමින් ඇෆ්ගනිස්තානයේ පරාජය කර ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම ඉක්පසු පැවතුණා ශ්‍රී ලංකාව සහ සෞදි අරාබිය අතර තරගයේ. එම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වුණා ඉතා පහසු ලෙස. මෙම තරගාවලියේ සජීවී දසුන් ඔබ වෙත ගෙනීමට පාපරිලොක්කන් අප සූදානම්. ඔබට තරගාවේ නවත්තන්න බගින්ට හැකියාව තිබෙනවා. ඩයලොග් නාලිකා අංක 1 2 6 ඔස්සේ පාපර ටීවී ඔස්සේ වගේ පාපර YouTube නාලිකාව ඔස්සේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම මෙම තරගාවලියේ සියලු දසුන් ඉතා සුපැහැදිලි ඔබ සමීප කිරීමට The Sport Ads කණ්ඩායම ඉතා වෙසක් දරනවා. ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. එවරත් පිරිනැමීම ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට බංග්ලාදේශ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 14ට 10යි. තවමත් නේපාලයේ පෙරමුණේ. එවරත් නැවතත් නේපාල ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. ඔවුන් දිගටම පෙන්නුම් කරනවා දැඩි ප්‍රහාරාත්මක ක්‍රීඩකයන් බව. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ආවරණ මග හරිමින් එක එල්ලෙම ප්‍රහාර සියල්ල එල්ල කරනවා. නැවතත් බංග්ලාදේශයේ ප්‍රහාරය ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට නේපාලයට තවත් ලකුණක් හිමි වෙනවා. සංඛ්‍යාවන් නේපාලයේ ලකුණු 16යි බංග්ලාදේශයේ ලකුණු 10යි. නේපාලයේ ලකුණු 6ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා.
नेपाලේ ලකුණු 16යි බංග්ලාදේශයේ ලකුණු 11යි नेपाලයේ පෙරමුණේ පසු වෙනවා. ඔවුන් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට තරගයේ ආරම්භයේ සිටම දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරා. සාර්ථක කොට ගැනීමක්. ඉතා උපක්ෂමශීලී පන්දු යොමු කිරීම නමුත් සාර්ථකව ගොඩනගනවා බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයන්. ඒවත් තම හොඳ පන්දු කොට ගැනීමක් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමෙන්. ඒ නිදැල්ල යොමු කරනවා නේපාල පිටසට. ඒවර තවත් සාර්ථක පහරක් නේපාල ක්‍රීඩකයාගෙන්. ඔවුන් දිගින් දිගටම දැඩි ප්‍රහාර එල්ල කරනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 17ට 10යි නේපාලයේ පෙරමුණේ. Up to now, first set of the game, Nepal leading points 17-10. එවර ලකුණ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට. ලකුණු සංඛ්‍යාව නේපාලයේ ලකුණු 17යි බංග්ලාදේශයේ ලකුණු 12යි. එවර තවත් සාර්ථක ප්‍රහාරයක් නේපාල කණ්ඩායමෙන්. ඔවුන් 18 වන ලකුණ වාර්තා කරනවා බංග්ලාදේශයේ තවමත් ලකුණු 12 පමණයි ලකුණු 6ක් පෙරමුණේ නේපාල කණ්ඩායම. එවර ලකුණ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට බංග්ලාදේශයේ 13 වෙනි ලකුණ වාර්තා. එවරත් නේපාලයේ ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. තවත් ලකුණක් කවුන්ටර් වෙනවා. ඒ සමගින් 19 වන ලකුණ වාර්තා කරද්දී බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම තවමත් ලකුණු 13යි ලකුණු 6ක් පිටපසින් සිටින නේපාල කණ්ඩායමට වඩා. එවර නේපාල කණ්ඩායමේ නැවතත් වැළැක්වීම සාර්ථකයි. බංග්ලාදේශයට එරෙහිව 120 වෙනි ලකුණ වාර්තා කරමින් ඔවුන් පළමු වටේ ජයග්‍රහණයට ආසන්න වෙනවා. බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයන්ට මෙම තරගයේ නැගිටීමට කිසිම අවස්ථාවක් වංගිට තිබෙන්නේ නැහැ. තරගයේ ආරම්භයේ පටන්ම හොඳ පන්දු කොට ගැනීමක් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමෙන්. එවල බංග්ලාදේශයට ලකුණ ඔවුන්ගේ 14 වන ලකුණ වාර්තා කරන්නේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව නේපාලයේ ලකුණු 20යි බංග්ලාදේශයේ ලකුණු 14යි. නේපාලයේ තවමත් ලකුණු 4ක් ලකුණු 6ක පෙරමුණක් ලබාගෙන සිටින්නේ. ඉතා ප්‍රබල පෙරමුණක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දු කොට ගැනීමක් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ. එවරත් බංග්ලාදේශයේ ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. විනිසුරුගේ තීරණය බංග්ලාදේශ ප්‍රදේශයට නේපාල ක්‍රීඩකයාගේ පන්දුව ඇඟිලි තුඩු වල ස්පර්ශ වී ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට ගිය බව තමයි සංඥා කරන්නේ. එවර ප්‍රහාරයක් නේපාල කණ්ඩායමෙන්. එම ලකුණ නේපාලයට ඒ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව නේපාලයේ 21 දක්වා ඉරෙනවා. බංග්ලාදේශයේ තවමත් ලකුණු 15යි. නැවතත් ලකුණු 6ක පෙරමුණක් ලබාගෙන සිටින්නේ නේපාල කණ්ඩායම.
In this video, the camera understands what the dog wants. Let's check it out. Now she's whining. I'm moving through the camera. Alarm. Wants to go outside. And I thought it was just the wind. She was really trying to tell me. I go to the call-up tab. Pre-order a smart collar. GPS. Health. Barking translation. My dog will have it soon. Trainee is looking for a chief emotion officer. My dog participates. Like and comment. Make her CEO and she will win a smart collar. There's no stopping her. එවර වැලැක්වීම අසාර්ථකයි. පන්දුව වාවරණයේ වැදී ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට මෙම ලකුණ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට බංග්ලාදේශයේ 16 වෙනි ලකුණ. The Central Asia Volleyball Championship. Game number 3, Nepal and Bangladesh. Currently Nepal leading the tally with 21-16. එවලත් නේපාල ක්‍රීඩකයාගෙන් ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් තරගයේ පුරාටම විශේෂ දක්වන සාමරත් බණ්ඩාරි තාත් දක්ෂ ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. ඒ සමගින් නේපාල කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 22 දක්වා එනවා. ඔවුන් දැන් පළමු කොටේ ජයග්‍රහණයට ඉතා ආසන්නයි. එවර ලකුණ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ 17 වන ලකුණ. එවල නේපාල ක්‍රීඩකයා සීමා ඉර පාස කිරීම නිසා බංග්ලාදේශ ලකුණක් කිවෙනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18 22යි. තවමත් නේපාලයේ ලකුණු 4කින් පෙරමුණේ. එවර ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. වැලැක්වීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. නේපාලය 23 වෙනි ලකුණ ලබා ගන්නවා. ඒ සමගින් ඔවුන්ට පළමු වටේ ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය වන්නේ තවත් ලකුණු 2ක් පමණයි. එවර නේපාල ක්‍රීඩකයාගේ ආවරණයේ වදින පන්දුව ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට ගමන් කරනවා. ඒ සමගින් ලකුණ බංග්ලාදේශයට ඔවුන්ගේ 19 වන ලකුණ. එවර අසාර්ථක පිරිනැමීමක් නේපාලයේ 24 වන ලකුණ වාර්තා කරනවා. ඔවුන්ට තවත් 1 ලකුණක් පමණයි අවශ්‍ය පළමු තරඟ වටේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. The Nepal need 1 point to win the first set of the game. එවර පහර අසාර්ථකයි. දැල තුලටමයි ප්‍රහාරය. ඒ සමගින් බංග්ලාදේශයේ 20 වෙනි ලකුණ වාර්තා කරනවා. එවර සාර්ථක පහරක් නේපාල ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රහාරය බංග්ලාදේශ ආවරණයේ වැඩි ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට ගිය බව පෙන්නුම් සිටින සඳහන් කරන්නේ.
බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයන් සහ පුහුණුකරුවන්ගේ ඉල්ලීමක් කරනවා එම තීරණය වැරදි බව. නමුත් මිනිසුරු තීරණය වෙනසක් නැහැ. පළමු වටේ ජයග්‍රහණය නේපාලය හිමි කරගන්නවා. ලකුණු 25ට 20ක් ලෙස. The first round of the game, Nepal won the 25-20. පරාජයෙන් පසු බංග්ලාදේශ පුහුණුකරුවන් සිය ක්‍රීඩකයන්ට උපදෙස් ලබා දෙනවා පෙන්නුම් කරනවා. ඔවුන්ට ආරම්භයේ සිට දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා නේපාල කණ්ඩායමෙන්. මේ පළමු වටේ ලකුණු තත්ත්වය නේපාලයේ ලකුණු 25යි බංග්ලාදේශයේ ලකුණු 20යි. පළමු වටේ ජයග්‍රහණය නේපාලයට ඔවුන් දැන් තරගයේ පෙරමුණේ පටලවනවා වට 1ට බිඳුවක් ලෙස. If you ever run ads on Meta, you've probably seen this message. And if your business depends on Meta ads, your revenue can drop overnight. But here's the important thing that most people don't realize. Meta bans rarely happen randomly. In most cases, there are specific triggers that increase the probability of restrictions. So in this video, I'll break down why Meta advertisers make and how to protect your ad seriously. The first reason, and probably the most obvious one, is not following Meta's advertising policies. When Meta rejects an ad, it usually means something in the creative, copy, or landing page violates their rules. That exaggerated claims, misleading promises, or targeting people based on personal attributes. Now, one rejected ad usually isn't a big deal, but repeated violations can quickly lead to restrictions or even full disabled ad accounts. Now, the second reason is something most advertisers never talk about, and it's your account trust score. Meta internally evaluates every advertiser using multiple trust signals. This includes things like account history, payment reliability, policy compliance, business verification, and spending behavior. If your account is new, Meta simply doesn't trust it. The highlight of the first set of the match. තරගයේ ආරම්භයේ සිටම නේපාල ක්‍රීඩකයන් දැඩි ප්‍රහාර එල්ල කරා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට ඉතාමත් හොඳ වේගවත් ප්‍රහාර දක්වන ලැබුණා. Nepal කණ්ඩායම ක්‍රීඩක ආදේශයක් සිදු කරනවා. පන්දුවේ සමර සෝදානම් පන්දුව පින්නැමීමට. හොඳ පන්දු පින්නැමීමක්. හොඳ පන්දු කොට ගැමෙන නේපාල කණ්ඩායමෙන් ඉතාම දක්ෂ ප්‍රහාරයක් නේපාලය පළමු වටේ පෙන්නුම් කර ප්‍රහාරාත්මක වේගය නැවතත් පෙන්නුම් කරනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 9යි නේපාලය බංග්ලාදේශයේ ලකුණු 11යි ලකුණු 2කින් බංග්ලාදේශයේ පෙරමුණේ. එවරත් නේපාල ප්‍රහාරයේ සාර්ථකයි. නේපාල කණ්ඩායම සියල් 10 වන ලකුණ වාර්තා කරනවා. දැන් ලකුණු පරතර 1 දක්වා අඩු වී තිබෙනවා. පළමු වටේ පවත්වාගත් රිද්මයට කෙමින් නේපාලය අවතීර්ණ වන බව පෙන්නුම් කරනවා. එවර පිරිනැමීම අසාර්ථකයි. පන්දුව ක්‍රීඩාපිටියෙන් ඉවතට බංග්ලාදේශයේ සියල් 12 වන ලකුණ වාර්තා කරනවා. නේපාලය තාමත් ලකුණු 10යි.
පන්දුව ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට බංග්ලාදේශය 13 ලකුණු වාර්තා කරනවා. නේපාලය තවමත් ලකුණු 10යි. Bangladesh leading the second set of the game 13-10. එවරත් බංග්ලාදේශ ආවරණය සාර්ථකයි. 14 ලකුණු වාර්තා කරද්දී දැන් ලකුණු බර්තරේ ලකුණු 4 දක්වා හෙළ ගොස් තිබෙනවා. නැවතත් නේපාල පුහුණුකරුවාගෙන් කෙටි විවේකයක් ඉල්ලා සිටින සිය ක්‍රීඩකයන් සමග ඔවුන්ගේ මානසිකත්වය පිළිබඳව කතා කිරීමට තරගයේ කෙටි විවේකයක් ලබා ගන්නවා. බංග්ලාදේශ පුහුණුකරුවන් සිය ක්‍රීඩකයන්ට උපදෙස් ලබා දෙන මෙම තරගයේ වටේ ඔවුන් ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි. පළමු වටේ නේපාලය ජයග්‍රහණය කළ. Well, they had Sonari de Blanco goes out of round. Still 4 points separating these two. Against Sandeep is serving. Oh, well, that was too long. Very disappointing serve from Sandeep. Put too much on it. It landed way out of court. So, Bahal is now serving for Nepal. Nepal are ahead by 5 again. Get a very good opportunity to win the sets, Nepal. And by Sandeepa. And a swing and kill from Dilshan, number 5 Dilshan from Sri Lanka. Puts it away so very easily. And what a good finish. Pulling 1 point back, still 4 points separating these two. As they're on serve. Saprera now is serving for Sri Lanka. 13-17. And a by-pass, Sonari blocked. Comprehensive monster block. Well. Magnificent to play. And then a point pulled back. Now just 3 are separating these two sides. 40-17 does serving. Pereira also handled by Pahal Sunil. This time great defense from Pereira. And Ranawaka with a swing and finish. Clinical stuff from Ranawaka. This is where he's so good. Now watch him creating the angle. Oh, he looked out of position. He was falling back. Vasily maintained his composure. Great work. So we could have a little timeout. So we could have a timeout, and now Sri Lankans are trailing just by 2 points. Just 2 points are separating these two. So very good comeback from Sri Lankans. And Pereira from Sri Lanka is serving. And he is the top player for Sri Lanka. Ranawaka, Deepati Ranawaka. Held by Pahal Sunil with a swing, and this time not defended, or not defendable at all. Ranawaka got his hand, or tried to get his hand underneath it, couldn't keep the ball alive. It's a powerful swing, right over the hands of the blockers. Excellent stuff from Nepal on this occasion. So Sonari on serve, handled by Deepati Ranawaka, and Ranawaka with a killer blow. Deepati Ranawaka down the line. Another powerful strike. It is really good.
Sri Lanka will serve. Deficit down to just 2 points. Handled by Sunil and Nagakorti with a finish. Great finish. After a long time, we're seeing Nagakorti into the act. And now, watch this in slow motion. Cross-court kill, pointing the edge of the block, and then it drops dead. Substitution for Nepal. Rajendra being reintroduced. They needed Rajendra. He's a terrific spiker, very powerful spiker. And his facial awareness is also pretty good. Handled by the libero. Deputy Ranawaka tried to dink it across the net. Couldn't quite do this. Actually, got the deflection. Has done extremely well. Deputy on serve down the right inside. Swing from Sunil. Wins him a point. And another very, very fine spike. Sunil getting into the act. Now watch this cross-court, exploring the seam between the two blockers. And superlative finish. Sunil on serve, handled by Sandeepa. And a kill from Lucknow. Wow. Down the centre of the court. Excellent finish, Lucknow. With Sun to Lucknow. Lays plays in for a position is middle blocker, height 197 centimeters. And Paul with a spike. And grand finish again. Paul off the blocker's head goes out of bounds. He also plays very well calculated volleyball, Paul. On 2 or 3 occasions we saw him getting blood. This watch creating a very, very fine angle. Having it touched out. Deputy handles the ball, not particularly impressive handling now. Nepal with a free ball. Oh, Rajendra blocked. Rajendra absolutely stout blocked. Couldn't penetrate through the blocker's hand. Pretty disappointing from Nepalese standpoint for Nepalese supporters. He's such a great player, and this time he was simply shut down by the blockers. Dilshan from Sri Lanka on serve. Handled by Sunil, and Pal again finishes the 6.5. What a great spike this was. Cross-court kill. He's so very special when it comes to cross-court swing and watch this. He has become the mainstay, the Nepalese team. Rajendra now on serve. Nice jump, so handled by Deputy Walker. Swing down the right-hand side from Dilshan, but that goes long. Lead back to 4 points. Nepal just 2 points away from winning this second set. They're 1 set down. They can make it 1-all. Twin 3-19. Rajendra still serving. Tosses the ball high. Deputy handles it. Sandeepa with a swing, and then overpass. Easy finish for Pereira. Pereira number 3. Aish Pereira finished the things off. Sri Lankan supporters are happy with this effort, and rightly too. Still 3 points all between these two sides as Sri Lanka's all serving. 20-23.
Sandeep on serve. Handled by Sunil. And Paul with a saying 3 blockers, but out it goes on the hands of the blockers. They couldn't keep the ball in play, perhaps better hand position was needed. Watch this great swing, and off the hands of the blockers, this goes out of bounds. So Paul also for Nepal. And Radawaka getting into the end. Great swing, great finish. It had to be Radawaka to put 1 point back. 1 set point is saved, and still 3 set points are available. So we could tell timeout is called. So we could tell timeout comes to its end. We are still at set point 24-21. Nepal are leading. Just 1 more point needed to make it 1-1. Prairie serving for Sri Lanka. And Sunil with a swing, and off the hands of the blockers, finding the edge of the block. This goes out of bounds. And Nepal with is wrapping up the second set, 25-21. What a good comeback from Nepal. 1-1 after the end of the second set. Excellent comeback from Nepal. With a great start by the Sri Lankans. Quite a few kills. And these are bang outlaw highlights which you are watching. Cross-throw kill from Paul. Paul was able to be the man of the set. Sunil also contributed, but slightly out of sorts for Rajendra. So extra scoreline 25-21. Nepal winning this second set. And with this, we are going to take a break and we will come back with a third set.
खुशामदीद इस्लामाबाद, लियाकत जिम्नेजियम इस्लामाबाद से मोहम्मद तौफीक एक बार फिर आपको वेलकम कहता है। श्रीलंका नेपाल के दरमियान मैच 1-1 सेट से बराबर। तीसरे सेट का आगाज हो चुका है, तीसरा सेट भी 1-1 के स्कोर से बराबर। कंट्रास्टिंग स्टाइल में ये मैच खेला गया। पहले सेट को डोमिनेट किया श्रीलंका ने, मगर दूसरे सेट में नेपाल ने एक गैलियंट कमबैक किया और इस तरह दूसरा सेट जीतकर ये मैच बराबर कर दिया। बेस्ट ऑफ 5 मुकाबले का अब ये तीसरा सेट खेला जा रहा है। बहुत कलरफुल सेटिंग है। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के चौधरी मोहम्मद याकूब और सुहेल खावर मीर साहब की अनथक मेहनत के बायस पाकिस्तान में ये 6 मुल्की टूर्नामेंट तीसरी बार उसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। और अगर किसी चीज़ की कमी इस कलरफुल सेटिंग में नज़र आती है तो क्राउड की नज़र आती है। तो हम एक ऐसा मुल्क जो जेनजी के लिए शोहरत रखता है, 65% आबादी जिसकी नौजवानों पर मुश्तमिल है, उनको दावत आम है कि तशरीफ़ लाएं और ये बैनुल-अक़वामी मेयार का वॉलीबॉल देखें। ठीक है, ज़िंदगी में बहुत टेंशन्स हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, मगर वो जो इस रैली के बाद आपसे बात करते हैं, बड़ा अच्छा सिंगल ब्लॉक था नेपाल का। सरे बाजार है यारों की तलाश, जो भी मिलता है खफा लगता है, और मुस्कुराता है जो इस आलम में बखुदा मुझको खुदा लगता है। बहुत उम्दा ब्लॉक, डबल ब्लॉक नेपाल का बॉल कोर्ट से बाहर। आपके होंठों पे अगर थोड़ा सा तबस्सुम आ जाए तो हमारी पूरी टीम ये समझेगी कि हम अपना हक और फर्ज अदा कर सकें। वो जो शायर ने कहा कि गम के लाखों दुकानदारों से एक तबस्सुम फरोश बेहतर है। ये है जी मोहम्मद शाहमीरी, ईरान से ताल्लुक है, 2 ओलंपिक गेम्स सुपरवाइज कर चुके हैं और टेक्निकल मामलात को यहाँ देख रहे हैं। और इस शेर की खुशी में गालबन चाय की आमद हुई है। कुफ्र टूटा खुदा खुदा कर, बड़ी उम्दा जद्दोजहद, और बार बार हम आपको बता रहे हैं कि डू एंड डाई मैच है दोनों टीमों के लिए। अगर सेमीफाइनल के लिए अपनी मौजूदगी बरकरार रखनी है तो इस मैच में कामयाबी हासिल करना जरूरी होगा। तारीफ बनती है नेपाल की साइड की, जिन्होंने बहुत जबरदस्त कमबैक सेट किया है। तमाम तर एक्सपेक्टेशंस और माहिरीने वॉलीबॉल की तवक्कुआत के बरखिलाफ उन्होंने बहुत उम्दा परफॉर्म किया है दूसरे सेट में भी, और तीसरे सेट का आगाज भी जबरदस्त अंदाज से। मोमेंटम और फॉर्म इस वक्त नेपाल के साथ, और साइड कोर्ट से बाहर खराब सर्विस। और चिकन विद मिक्स वेजिटेबल या बीफ फ्राई, बीफ चिली हुई है। अपनी जानिब नेट में खेल गए, फेवर रिटर्न की श्रीलंका ने। ओवरऑल अगर हम नेपाल की टीम की बात करें तो इस टीम की कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में अब तक एक ही मैच इन्होंने खेला है। 5 सेटर गेम काजाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने में कामयाब रहे थे कल, अगरचे उन्हें शिकस्त हुई, लेकिन बहुत उम्दा फाइट की काजाकिस्तान के खिलाफ, और अब सेम फाइट बैक ये श्रीलंका के अगेंस्ट पुट कर रहे हैं। 4 पॉइंट्स की बढ़तरी ले चुके हैं कमबैक के बाद। ये वाला फिर उतार दे के नॉर्मल तरीके से उतार देंगे। 7-3 नेपाल। हिमालयाई रियासत हार मानने को तैयार नहीं है।
एशिया में 7वीं रैंक की टीम है मगर उसके खिलाफ नेपाल बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तीसरे सेट में 7-3 की बढ़तरी लिए हुए। पहल का ये अच्छा स्पाइक, एक और पॉइंट जोड़ा 8-3। आज दूसरा दिन है कावा चैंपियनशिप का और दूसरे दिन का पहला और मजमूई तौर पे चैंपियनशिप का चौथा मैच। और ये रिप्ले आप देख रहे हैं, पहल का स्पाइक था 8-3 नेपाल। बहुत अच्छा डायगोनल स्पाइक श्रीलंका की जानिब। डीपीटी को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। सफातकार बड़ी तादाद में मौजूद हैं अपने अपने मुल्कों टीमों को सपोर्ट करने के लिए। श्रीलंका के शायकीन मौजूद हैं और 6 पार्टिसिपेटिंग ममालिक के झंडे यहां अपनी बहार दिखा रहे हैं। श्रीलंका अच्छा अटैक, सर्व, स्पाइक सर्व, कमजोर दिफा और उसको फिनिश किया। स्पाइक सर्व मॉडर्न वॉलीबॉल में सबसे लीथल वेपन है। ये देखिए उसका एक मुजाहरा आपने देखा, कमजोर रिसेप्शन थी। थैंक यू वेरी मच कहा श्रीलंका ने। कमबैक की कोशिश कर रही है, 5-8 के खसारे में है तीसरे सेट में। एक और अच्छा स्पाइक सर्व। उम्दा पहल 6 नंबर की जर्सी में। ये पहल को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फौरी तौर पर जवाबी हमला। 9-5 ये रिप्ले में आप देखेंगे। पहल ने बड़ी अच्छी पोजीशन पे चले गए थे और ब्लॉकर से बचाते हुए डायगोनल खेले। ये हैं पहल खुद सर्विस पर आए। अच्छी उम्दा डिपिंग सर्व, बॉल खराब हो गई और नेट से टकरा गए श्रीलंका के खिलाड़ी। डबल फिगर में नेपाल। 10-5 का स्कोर नेपाल और श्रीलंका के माबैन। ये सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का मैच नंबर 4। ये देखिए नेट से टकरा गए थे और वक्त हुआ चाहता है वीगो टेल्स टाइम आउट का। Welcome back. A small but colorful crowd. बारिश की आवाज अभी भी हमारी समातों से टकरा रही है। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है और बड़ी कलरफुल सेटिंग है। 9 कैमरों की मदद से और जब कैमरे की मदद से हम ये प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट टीम के साथ आपके लिए ये चैंपियनशिप पेश कर रहे हैं। आई होप यू आर एंजॉयिंग एट योर होम, बट लाइव देखने का अपना ही लुत्फ है। आज 2 मैच मजीद बाकी हैं। 12:30 बजे और फिर 3:30 बजे पाकिस्तान की टीम सफारा होगी बांग्लादेश के खिलाफ। नेपाल 11, श्रीलंका 6। पहल को आप देख रहे हैं। जो दूसरा मैच 12:30 बजे का हम अनाउंस कर रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट कि ये मैच कितनी तवालत इख्तियार करता है। दोनों टीमें ऑल आउट जा रही हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि अगर आज का मैच हारती हैं तो फिर उनके लिए सेमीफाइनल के रास्ते तकरीबन बंद हो जाएंगे। नो गो एरिया हो जाएगा सेमीफाइनल। 12-6 नेपाल। तब्दीली
जिगन 4 नंबर के उनको मुतारफ कराया गया और तुरशेरा 5 नंबर में बाहर लाए गए हैं श्रीलंका की जानिब से। ये आप जगन को देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं 4 नंबर की जर्सी। ड्रॉप बॉल की कोशिश और उसने नेट टच के 22 पॉइंट जाएगा इन द फेवर ऑफ श्रीलंका। अभी भी पॉइंट्स की बढ़तरी जरूर है नेपाल के पास, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंकन साइड के पास ये एबिलिटी और स्किल सेट है कि वो मैच में कम बैक कर सकते हैं। ये देखिए नेट से टकरा गए थे नेपालीज खिलाड़ी। अक्सर जिक्र करते हैं शायकीन वॉलीबॉल का, दोनों टीम्स की हद तक माकूल सपोर्ट मौजूद है। नेपालीज फैन भी यहाँ पर हैं, इसके अलावा श्रीलंकन फैंस भी, जबकि कुछ न्यूट्रल फैंस भी दोनों टीम्स को और अच्छी क्वालिटी वॉलीबॉल को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत उम्दा सेटिंग डाउन द लाइन, साइड लाइन से बिल्कुल बचाते हुए खेले हैं, पॉइंट जोड़ने में कामयाब रहे हैं नेपाल के लिए। इस सेंट्रल एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कुल 6 टीम्स शरीक हैं। पाकिस्तान की टीम ओवरऑल रैंकिंग के एतबार से, फॉर्म के एतबार से और होम ग्राउंड के एतबार से सबसे फेवरेट टीम है, और खास तौर पे जो पाकिस्तान का होम ग्राउंड पे ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन द लास्ट 12 मैचेस, पाकिस्तान हैव बीन अनबीटन इन कावा एट होम ग्राउंड। और पाकिस्तान उस फॉर्म और मोमेंटम को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। जिस तरह नाज़रीन फुटबॉल वर्ल्ड कप में आपने देखा कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो खिलाड़ी ऑन द ग्राउंड मैच में दिखाता है मैन ऑफ द मैच कहलाता है, और ओवरऑल जो गोल्डन बूट अवार्ड होता है, एम्बापे को फ्रांस के गोल्डन बूट अवार्ड हुआ। इसी तरह इसमें हर मैच में जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा स्पाइक लगाता है, सबसे ज्यादा ब्लॉक करता है, सबसे ज्यादा असिस्ट करता है, उसको MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया जाता है। 15-8 पे पहुंचा स्कोर। ब्लू में नेपाल, रेड में श्रीलंका। श्रीलंका की टीम खेल रही है और श्रीलंका चाय के लिए मशहूर है और चाय से हम लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बहुत उम्दा ब्लॉक नेपाल की जानिब से। क्रॉस कोर्ट शॉट जो कोर्ट से बाहर गई। और नाज़रीन बड़ी कॉम्पिटेंट जो ऑफिशियल्स हैं इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं, और अगर हम रेफरी पैनल का जिक्र करें तो बड़े मुस्तनद काज़ाकिस्तान के एडियोस एक्मलौर, हमायून मुर्शिद बांग्लादेश से, समीता समरनाथे श्रीलंका से और विजय कुमार नेपाल से, ये फर्स्ट रेफरीज हैं जो इस चैंपियनशिप को सुपरवाइज कर रहे हैं। और फिर जाहिर है पाकिस्तान के शोएब, मंशा, सप्तान और उबैदुल्ला, इस मैच को उबैदुल्ला सुपरवाइज कर रहे हैं। और ये VIP गैलरी में आप हमारे गैर मुल्की मेहमान और ऑफिशियल्स को देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि गम के लाखों दुकानदारों से एक तबस्सुम फरोश बेहतर है। तो ये लोग जो कोर्ट पे आए हुए हैं, ये जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां समेट रहे हैं, और आपको भी दावत आम है। बॉल प्लेस करने की कोशिश, पहल का दूसरा अटेम्प्ट कमजोर शॉट थी, तीसरा अटेम्प्ट और टच होता हुआ बॉल बाहर गया। मुसलसल तीसरी जद्दोजहद। कर्नल कैसर मुस्तफा पाकिस्तान के ये हीरो हैं। 89 इसी ग्राउंड पर तारीख रकम की थी। ये देखिए बड़ा उम्दा टच बॉल खिलाया पहल ने। 17-9 नेपाल को अब तीसरे सेट में पकड़ने के लिए कुछ खास करना पड़ेगा श्रीलंका को। डबल फिगर में श्रीलंका की टीम पहुंची है 10-17। ये हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है पाकिस्तान वॉलीबॉल के लिए सैफ गेम्स में, और जैसे नोमान आपको बता रहे थे काबा में पाकिस्तान 12वें मुसलसल मैच में अनडिफीटेड है। ये जिगन जो अभी थोड़ी देर पहले मुतारफ कराए गए थे, उनकी अच्छी फ्लोटिंग स्पाइक सर्व
आउटसाइड हिटर पोजीशन से लगाया गया नेपाल का उम्दा शॉट। ओवर टू यू नोमान। अटैकिंग वॉलीबॉल का बेहतरीन मुजाहरा कर रही है नेपालीज टीम, जो फाइटिंग स्पिरिट जिसका हम बारहा जिक्र कर चुके हैं कल के मैच में भी काजाकिस्तान के अगेंस्ट, और आज भी एक सेट डाउन होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। खराब कमजोर रिटर्न था, फिर चांस मिलेगा श्रीलंका को, और अब की बार डाउन द लाइन खेलकर एक अच्छा पॉइंट जोड़ने में कामयाब रही है श्रीलंका की टीम। पहले सेट में कामयाबी के बाद तो साहब ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा लाइट ले गए अपने ओपोनेंट को श्रीलंकन टीम, और जो जबरदस्त स्पाइक सर्व और अटैकिंग वॉलीबॉल पहले सेट में देखने को मिली, उसके बाद दूसरे या तीसरे सेट में उस तरह की परफॉर्मेंस रेप्लिकेट नहीं कर पाई श्रीलंकन टीम। ये आपका जाविया नजर है और मैं उससे जरूरी नहीं कि मुत्तफिक हूं, मगर बात यह है कि जो नेपाल की टीम है उसने कमबैक बड़ा अच्छा किया है, और मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि दोनों टीमों को बखूबी ये एहसास है कि अगर उन्होंने अपने संजीदा इंटरेस्ट इस टूर्नामेंट में बरकरार रखने हैं तो उसके लिए ये मैच बहुत ज़रूरी है। और मेरी नेपाल के मैनेजर से जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हमारे इस कॉन्टिजेंट में 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें पहली बार इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, तो इस लिहाज से उनकी कारकर्दगी और फाइट बैक एप्रिशिएबल है। ये आप रिजर्व बेंच देख रहे हैं नेपाल का, उनके जो मैनेजर हैं वो शरिस्ता हैं और हेड कोच हैं प्रसाद भाटिया। 7 पॉइंट्स की बढ़तरी है इस वक्त नेपाल के पास। बिलाशुबा अच्छी परफॉर्मेंस रही है नेपालीज टीम की, इसमें तो कोई शक नहीं है, और अब वो अपनी सबकत को 8 पॉइंट्स जो है वो बढ़ा चुके हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए अपने जो प्लेयर्स हैं उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर देना, क्योंकि वहां जाकर डिफरेंट कंडीशंस में वो अपने आप को एक्लेमेटाइज करते हैं, डिफरेंट कोर्ट्स में जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं, और खास तौर पे जिस तरह डिफरेंट क्राउड्स के सामने वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अवे कंडीशंस में खेलना, अवे क्राउड के सामने परफॉर्म करना, उम्दा सेटिंग, सेटर का कमाल था यहाँ पर। फ्री नेट ऑन ऑफर, इससे भरपूर अंदाज से फायदा उठाया, पॉइंट जोड़ने में कामयाब रही है श्रीलंका टीम। ये देखिए कप्तान हिरू की अच्छी सेटिंग, और उसके बाद सिंगल ब्लॉकर को पेनिट्रेट करना था जिसमें कामयाब रहे। 13-20 श्रीलंका की जानिब से डाउन द लाइन सर्विस बहुत उम्दा, 11 नंबर की जर्सी में सुनील, ये आप देख रहे हैं, लॉट ऑफ स्प्रिंग इन हिज लेग्स, ये है सुनील। और उनके जो रिजर्व खिलाड़ी हैं वो भी खुद को वार्म अप रखने के लिए जंप कर रहे हैं। ये देखिए सुनील का बहुत उम्दा डायगोनल स्मैश आउटसाइड हिटर पोजीशन से, जवाबी हमला श्रीलंका का, मगर श्रीलंका 14-21 के खसारे में है तीसरे सेट में। पोखरा में और खटमंडू में लीग्स होती हैं नेपाल की, और ये देखें थॉटफुल कितनी गहराई से वो इस सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। माहिर शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपने जहन में ये सोच रहे होंगे कि किस खिलाड़ी को किस वक्त कहां से मुतरफ करवाया जाए। क्रॉस कोर्ट शॉट 22 नेपाल, वो जो हम देसी इस्लाह में कहते हैं लंटर पड़ चुका है, और मोस्ट प्रॉब्ली नेपाल विल emerge victorious in at least this set. जी हाँ बिल्कुल, और काफी हद तक कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग वॉलीबॉल रही है नेपालीज टीम की जानिब से। उन्होंने कोई ओपनिंग फराहम नहीं की, बार एक खराब सर्व बॉल साइड कोर्ट से बाहर, और ये भी बहुत कम देखने को मिला है। नेपालीज टीम की जो सर्विसेज रही हैं वो भी बहुत जानदार, अच्छी सर्व्स उन्होंने की हैं, और शायद यही वजह है कि दे आर 7 पॉइंट्स अप। यार ये इनसे ग्राउंड म्यूजिक तो बंद कराएं, वॉलीबॉल में कभी नहीं होता इंटरनेशनल मैच में ड्यूरिंग मैच म्यूजिक बंद करो। बाईस 15 का खेल, तमाशाइयों की कंसंट्रेशन
खिलाड़ियों की कंसंट्रेशन खेल पर होती है। इस मौके पर हॉल में बुलंद आवाज में म्यूजिक का बजना कम से कम वॉलीबॉल के कवानीन में तो नहीं है। ओ, बहुत उम्दा कोशिश की थी, जैसे मुरलीधरन कभी कभी ऑफ स्पिन की जगह गुगली करा देते थे, सरप्राइज करने की कोशिश इस सर्विस से। डिप्टी आप देख रहे हैं 8 नंबर की जर्सी, 18 नंबर की जर्सी में उन्होंने को, ये बड़े ओल्ड फॉक्स हैं अपनी टीम की, एक शीट एंकर रोल है इनका। दोनों टीमें सर्विस में रिस्क नहीं ले रही, नोमान मोहतात सर्विस कर रही हैं, शोर सर्विस कर रही हैं। वो जो हम पाकिस्तान का मैच हमने कल देखा था जिसमें थंडर लाइक स्पाइक सर्व्स थी, वो नजर नहीं आ रही। बहुत उम्दा डबल ब्लॉक को श्रीलंका के जैशन ने पेनिट्रेट किया, मैली जैशन। ये देखिए अच्छी सेटिंग थी, अपने सर के पीछे ब्लॉकर्स को पेनिट्रेट किया। 17-23 बहुत बड़े खसारे का सामना श्रीलंका को। एस सर्विस, उबैद ने लाइन जज से आंखों ही आंखों में बातचीत की और फिर दोनों ने मुतफिका फैसला दिया कि बॉल कोर्ट के अंदर गिरी। 5 पॉइंट की लीड और इसी को देखते हुए टाइम आउट नेपाल की जानिब से, वी गो टेल टाइम आउट। वेलकम बैक। नेपाल 23 श्रीलंका 18। आज के प्रोग्राम का पहला मैच, तीसरा सेट। दोनों टीमें एक सेट से बराबर और बज़ाहिर तमाम तर आसार यही हैं कि नेपाल एक के मुकाबले में 2 सेट की बढ़तरी ले लेगा। 23-18 से आगे है, मगर वो जो कहते हैं कि इट इज नेवर ओवर टिल द फैट लेडी सिंग्स। फैट लेडी इज फाइनली बैक। सेट पॉइंट पर पहुंच गई है नेपाल की टीम और बैक टू बैक दूसरा सेट जीतने के बहुत करीब है। वॉलीबॉल के पंडित्स, वॉलीबॉल के एक्सपर्ट्स की तमाम तर प्रेडिक्शंस के खिलाफ नेपाल की टीम बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा कर रही है। सर्विस और पॉइंट जोड़ने में कामयाब रही है श्रीलंकन टीम। एक सेट पॉइंट जरूर बचाया है श्रीलंका ने। मुझे बखूबी एहसास है कि पंडित आप मुझे ही कह रहे हैं, मगर आखिर में यू हैव टू कट अ सॉरी फिगर व्हेन यू विल सी द फाइनल स्कोर लाइन। सुबह अखबार में जो रिजल्ट आएगा वो मैटर करता है। वो जो माहिरीन कहते हैं कि दुनिया जद्दोजहद नहीं नतीजा देखती है। जी हाँ, नतीजे का ही अभी हमें इंतजार है और नतीजा फिलहाल तो ये कह रहा है कि नेपाल की टीम जो है वो भरपूर अंदाज से डोमिनेट कर रही है। चांस है नेपाल के पास, भरपूर अंदाज से फायदा उठाया इस चांस से नेपालीज टीम बैक टू बैक दूसरा सेट जीतने में कामयाब रही है और बहुत शानदार कारकर्दगी कल काजाकिस्तान के खिलाफ दिखाई नेपाल ने और आज उन्होंने श्रीलंका को बैक टू बैक 2 सेट्स में शिकस्त दी है। बैंक अल्फला हाइलाइट्स सेट नंबर 3 की, जहां उम्दा कारकर्दगी नेपाल की टीम ने दिखाई। श्रीलंका थोड़ा ऑफ कलर इस सेट में दिखाई दिया है। तो खातिर खान की जानिब से अटैकिंग अटेम्प्ट्स नहीं थी और दूसरी जानिब बहुत ज्यादा अटैकिंग अटेम्प्ट्स थी नेपलीज टीम की जानिब से और उन्होंने तवातुर से दूसरा सेट अपने नाम किया है। इको स्टार स्कोर लाइन आपके साथ शेयर करें। 25-18 से पहला सेट जीतने के बाद 25-21 और 25-19 से अगले दोनों सेट्स में कामयाबी मिली है नेपाल की टीम को। वक्त हो जाता है एक शॉर्ट ब्रेक का। विल सी यू ऑन द अदर साइड।
we are back with the fourth set. Nepal are leading 2-1. And they're on serve. Harry was the server. And Jihan with the first kill of the set. Jigan, in fact, Jigan was the spiker from Sri Lanka. Now watching slow motion, perfect setting cross, solitary blocker. Area is not really good enough to block him. Just a containing block. He attempted. So Sandeepa's serve goes long. So it's 1-1 in the fourth set. Nepal, after losing first set, they came back so very strongly. And now they are 2-1 ahead. And they're looking nice and solid. Quite good. Salil on serve. Held by the libero, Victor Merceda. And what a good finish. What a great kill. In Dubara, I reckon it was, for Sri Lanka. I would love to watch this in the slow motion. What a great kill. No, it was Pereira, in fact. Pereira was the man. Just a lone blocker present at the net. Was never really getting too good enough. Pereira on serve. Slightly out of system. But Rajendra. A terrific drop right into the centre. Wicket space available. It's a sort of a campfire situation. No one went for it. An excellent placement. Rajendra very, very technical. And tactical too. So, nicely handled by Sonari. And now they've got a free ball. Sri Lankan down the left side. Dilshan, cross court, Singh and kill. Number 5 from Sri Lanka, Dilshan. What a great finish this was. Now watch this. Again, just one blocker to deal with. And he does it so very easily, so very nicely. So Jigan serving for Sri Lanka, and they were ahead, handled by Sunny Singh from Bahal. Oh, it was a wild thing, pretty disappointing. Such a great player, Bahal, but on this occasion, he absolutely miscued it, misconnected it, and that went wide. It just worked. Perhaps he didn't have quite the approach he needed, the momentum he needed, didn't have. Not handled. Ball swing from Rajendra wins him a point. Pointing the block, and then it goes out of bounds. Mughal Steel replay, and it's just this off the edge of the block, goes out of bounds. Sandeepa handles it. Dilshan with a swing off the edge of the block, and then it drops. Dilshan is such a powerful spiker, never really easy to contain. Watch this in the slow motion. Exporting the scene between the block is Dilshan on serve. Nice jump serve. Handled by Bahal. Bahal getting into the act. Boston Live, a bit of confusion. Sandeepa, great defense from Nepal as well. Out of system. The return comes. And now Sandeepa, another opportunity. Great kill. Cross kill finish. Sandeepa. Number 13, right through the blocker's hands. Great penetration. This is what they need from him. Just watch this. He might be looking slightly off balance, but now we go to timeout.
So we get a timeout comes to his end. And the match is going to restart. Very good start for Sri Lanka. Need to win this set to stay in this contest. 6-3, they're ahead. 3-point lead, and they now need to build on it if they are going to stress this match into 5 sets. So Pereira with a ball swing, good block touch, picked up in the deep, and then this finish. Wow, absolutely crackerjack from Sri Lanka. And they are on the roll. The supporters are very, very happy. I can see them. 7-3, 4-point lead for Sri Lanka. Meanwhile, Nepal's captain is involved in conversation with the top referee, the up official, and this is the Sri Lankan segment of the crowd. They are really happy to see this side coming back into the game. So substitutions been made. Neerup introduced. Chhetri called off. Neerup is introduced. So handled by Sunil. Ball this time blocked. Recycle ball. And again, pretty disappointing display of skills from Nepalese. They are being consistently blocked. They don't have any plan B, it seems. Now avoid this back row attack and a great block. Sandeepa from Sri Lanka's the blocker. So now 5-point lead for Sri Lanka. 18 in serving. What a good comeback in the 4 sets for Sri Lanka. Oh, the tape handled by Sunil Singh from Nepal. Looks like the out of sorts earlier, but on this occasion he doesn't miss out on this cross-court kill. This cross-court swing. Just watch him. 2 blockers sliding towards his right, so create an angle inwards, and that inside angle helped him to score a kill. And he himself is serving. Foul. Handled by Hemraj, sing by Vasant Lakmal. Well, not great defense from Nepal. What has to say this? They're looking pretty impressive earlier. But Vasant Lakmal came up with terrific swing and kill. And himself is serving. 9-4, 5-point lead still intact. So Vasant Lakmal is the server. His side looking quite good, nice and solid. They've come with a purpose, that's what's it. 9-4. Like so. And a swing from Sunil. After some time, we have seen him with this type of swing and kill. This is a great player. Great player, Sunil. What a good finish. Oh, wow. What about this? Basnet. Neerup. Basnet for this. Nepal right-handing replays. And Indwara from Sri Lanka. Serving handled by Sunil Singh from no. Kodjao grabs. No. Ball is still alive. Oh, it was a wild swing. That goes long. Pretty disappointing effort from Sandeepa after such a stunning save. He should have done better with that opportunity. Watch this in the slow motion. Oh, pancake. Well, that could be controversial.
says play on. So the ball set down the right inside for Sandeepa, and he contributes as well. Cross-court kill, Sandeepa, number 13. Watch this in the slow motion. I won't finish this was. One blocker is never really good to it now. Mostly not going to it now. 5 points are still separating these two. Serve from Sri Lanka down the right hand side. Oh, goes into the net. Jagan from Sri Lanka looked pretty disappointed on this occasion. Nepal serving. Trailing by 4 points. 7-11 handled by Sandeepa. Dilshan getting into the net. Great H on the libero from Nepal. Another swing, but this time he goes into the net. Pretty disappointing swing from Dilshan. Sarush Dilshan, number 5. Now watch him doing this. Crossfit angle he tried to create, but didn't have the height. Oh, great block. Pahal it was. Leaving Sri Lankans absolutely stunned. That was top class stuff from Nepal. Now watch this in the slow motion. Oh, great block. Sabutel timeout. So we could tell timeout comes to its end, batting to restart, and slowly but surely Nepal are coming back into the game. At one stage they were trailing by 5, no, just 4 points are separating these two. So it's still on so. Held by Mercedes Singh from Pereira. Off the blocker's hands goes out of bounds. So solid swing, Pereira. Just watch him. A blocker with wingspan block didn't quite work. So Pereira himself is also 9 total. 9 inside. Oh, block this time from Sri Lanka. Wasanto as the blocker. And this was absolutely stunning. And the spiker couldn't do much with it. Pereira still on serve. Handled by Sunil. Bahal with the opportunity. Good block touch. Oh, it's overpass. Oh, wow. They could have done better with this. But what a great display of skills from the Nepalese team. Nagakurti is serving. And just watch this. What a good draw this was. This was simply sensational. So Nagakurti is serving for Nepal. 30-10. Still they're ahead. 2 points for these two sides. Almost an overpass and Onish. The top player, can't tell you this. This was a ripper of a spike. Sri Lankan defense had no answer to it. Lays player profile. Rabin. Nagakurti, 187 centimeters side. Oh, well, that's for the matter system from Ball and off the hands of the blockers. The ball goes long.
Well, this is where ball is so good. This was simply stunning stuff. So now it's Vigotel timeout. So we are back after Vigotel timeout. Timeout was taken by the Sri Lankan. I must say they were ahead by 5. Now lead trimmed down to just 1 point standing between these two sides. Dilshan looked slightly out of alignment, but still put enough on it to earn him a kill. He's a great player. Looked out of position. Body contorted midair, but still he kept his composure. So that is just superlative stuff. So Jigan now serve. Jigan from Sri Lanka, handled by Sunil. Oh well, that was not particularly persuasive. So now they're a free ball. Oh, at this time there's a very fine block. Just over the net, and it hits the antenna. So foul given against Sri Lanka, making it 13-14. Nepal are just 1 point behind. Now this is where it hits the antenna. So Nepal on the serve down the right hand side, an excellent finish. Jigan from Sri Lanka. Great cross-court kill. Deepesh was the man in the firing line. He couldn't keep the ball alive, couldn't defend this, couldn't pick this up. Just forced this. Oh well, the second blocker left it. It seems he threw his head as if the ball was going long. Oh well, handled by Sunil. Pal with a swing. Oh well, this goes long. Lackluster performance from Paul. He should have done better with this. He's so good. He is a consistent performer on this occasion. Perhaps lapse of concentration of what, but pretty disappointing swing as well as that went long. So Pereira is serving for, or it is perhaps Dilshan serving for them. And it has landed in. Oh, that is an ace. Would you believe this? Dilshan scores the ace. Well, these aces are rarity at this level, but watch this. Tosses the ball high, jumps high, and it landed in. So we get out timeout. So we could tell timeout ends. And fourth set is going to restart as Sri Lankans are ahead by 4, regaining 4-point lead, 4-point cushion. Could be good enough. They just need to kick on with this situation, this performance. 17-13, Dilshan on serve. Sunil again handles it. Ball is set for Pal off the edge. Off the block, out of bounds. Another very good swing. This is where Pal is so good. He looked off colour 2 moments ago, but perfectly able to find
to block his head and deflected it wide. Oh well, it was slightly out of system for the Sri Lankans. Sandeepa goes into the net. Would you believe this? They can't afford these mistakes. It's a must-win set for them. They need to win this set if they are to stay alive in this contest. Just like this. Slow motion. And goes into the net. Sandeepa handles it. And Singh after the blocker's hand goes long. It's a very good effort from Dilshan. So Vasanta now serving. 3 points are still separating these two. Vasanta on serve. Vasanta Lakmal, number 8, is serving. 3 points are still between these two. Must win set for Sri Lanka if they have to stay alive in this match. So, handled by Bahal. Singh defended extremely well down the right inside. Just tips it over the net. All the pipe. Bahal. Oh, a great thing. Lakmal couldn't do that. Vasanta Lakmal in the flooring line. Couldn't keep the ball up. Another point pulled back. Just watch this. It was a great defense. But solitary blocker. And the angle he created was sharp enough to beat him. And the man in the front line was Vasanta Lakmal. He is now replaced. So now down the right hand side is blocked. Jigen is blocked. Would you believe this? This is called a roof block. And now just 1 point lead for Sri Lanka. Just 1 point separating these two. That was such a good play, good comeback. Again, they started falling apart. Oh, well, it was a great tip. Just tips it over the net. Dilshan it was. Dilshan very rarely makes mistakes. You need to use him more than often. If Sri Lanka are to win this set, it has to be Dilshan just like this. Perfectly picking the wicket spot. So in Dwara, that is good so for Sri Lanka. 2-point lead restored. Handled by Sunil and Singh. Oh well, very good spike. What a great finish that is. Yeah, libero, isn't he happy? Sri Lankan libero, great kill. So 2017. Sri Lankans are leading by 3. Sunil with us. Singh out of the hands of the blockers goes out of bounds. Point pulled back. Deficit declined to 2. Substitution had been made. Also we can see just Singh off the hands of the blockers throws out of bounds. Nepal is serving. The captain Harry is on serve. Side is still trailing by 2. Sri Lanka needs 5 more points to win this set to make it all square. 2-all. Oh well, that was the dynamite thing from Dilshan. Number 5 Dilshan. What a cracking spike. And this was not defendable at all. Watch this. Look at the speed of the swing of the arm. It's a ripper of a spike, one has to say this. So Sandeepa is serving for Sri Lanka. And 3 points again
separating these two sides. Sri Lankan serve. And they need to win the set. Switch it. Oh, he goes into the net. Sandeepa, pretty disappointing effort at this stage of the game. No unforced error they can afford. 21-19, they're leading Nepal serve 19-21. There's going to be Sunil on serve for Nepal. Toss the ball high, and that was handled by Sandeepa. And for Dilshan, another good drop. Oh wow, he is super sensational. Very, very rare he makes mistakes. Dilshan to Sara Dilshan, watch in replay. Oh, what a great dip. And again, misread by the Nepalese defense. He has been doing this quite often, but Nepalese defense again not able to read him. So this is where they need to improve. It's a very fine player, just rolls it over the head to the blockers, also with the net. So Pereira on serve for Sri Lanka. Handled by Sunil Singh from Bal, very well defended. Another opportunity, great defense, and Bal, oh well, he is just a pack of a dynamite. Bal from Nepal, just a penetrate his spike. Substitution has been made for Sri Lanka. We watched this in the slow motion. Bal just watching one blocker to defeat, and he does so very nicely. That is so good. So as serving for Nepal going to be Nagaroti and by Sandeepa. Again, it has to be Dilshan, to Sara Dilshan. What a player he is. And a very sharp angle, 4-4 to say it. So very, very sharp. Just watch him playing this. Beating the defense all ends up. Pereira also handled by Bal. Swing from Bal. Oh, it goes long. Such a dynamic player, Bal, but misses out on this opportunity on this occasion. It's a set point for Sri Lanka. Must needed for Sri Lanka. Just 1 point they need to make it to Sri Lanka are on serve. Jigan to serve, handled by Bal. Almost an overpass. Oh, point given against them. Oh, well, he's stretched too far over the net. 1 set point saved. 1 is still in 10. Oh, it was Nepalese ball, and Sri Lankan player transgressed to it. Stretched a little too far over the net. Now handled by Sandeepa. The ball set for Dilshan again. This time drop doesn't quite work. And drop from Sunil picked out by Vikramasena, and this sink, back row sink. Sandeepa, it was perhaps hard. And this was something they desperately needed. Sri Lanka winning this 4th set, 25-21. Much to the delight of the Sri Lankan supporters. And a very, very good comeback by them. But these are Bank Alpha set highlights. Just watch Nepal playing. They played well, but Sri Lankans overall dominated this set. 3-4 point lead remained always intact. And it was so good, Dilshan with his drops, and then look at that swing. So equal star set score 25-21. 4 set goes to Sri Lanka, making it 2-all. And with this, we are taking a short break. We will come back with the decider.
खुश आमदीद नाजरीन। मोहम्मद तौफीक और नुमान चौधरी की जोड़ी आपको सलाम अर्ज करती है। मैच इज इवन स्टीवन, 2-2 सेट से दोनों टीमें बराबर हैं। नेपाल और श्रीलंका की टीमें कल भी 5 सेटर खेली थी और इस टूर्नामेंट का अब तक कमाल ये रहा है कि पाकिस्तान के मैच के अलावा जो 3 स्ट्रेट सेट में गया, बाकी तीनों मैच 5 सेटर हुए हैं। और जाहिर है ये कल भी 5 सेटर दोनों टीमें खेली हैं, शिकस्त खा गई, मगर उससे जो एनर्जी सैपिंग हुई है, उससे उनकी जो फिटनेस लेवल है उसमें वाज़े तौर पे फर्क पड़ा है। एनर्जी डिप हुई है और उनके दिफा में भी क्रैक्स नजर आए हैं। अब फैसला कुन 15 पॉइंट का आखिरी सेट है जिस पे फैसला होगा कि कौन सी टीम स्कोर शीट पर अपनी मौजूदगी का ऐलान करती है। पाकिस्तानी पेयर उबैदुल्ला शाह और शोएब मंशा इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं श्रीलंका की जानिब से। ये उबैदुल्ला को आप देख रहे हैं 5वें और ये मंशा 5वें, और फैसला कुन सेट का आगाज होगा
और बड़ा क्रुशियल जाहिर है दोनों टीमों के लिए, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, नाउ और नेवर, डू और डाई सिचुएशन है। और पेट्रोग्लो जो कोच हैं श्रीलंका के, बिल्कुल इस वक्त कूल एज अ कुकम्बर खड़े हुए हैं। बड़े तजर्बाकार यूनान से ताल्लुक रखने वाले कोच हैं। व्हाइट शर्ट में आप देख रहे हैं फर्स्ट ब्लड ड्रॉ किया नेपाल ने। हिमालयाई रियासत है और बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स कल्चर है नेपाल में। और ये रिप्ले में देखिए, डबल ब्लॉक के ऊपर से जो स्पाइक रीच है और जो ब्लॉक रीच है वो भी दोनों टीमों की कम हुई है। ये टच बॉल खिलाया, कम बैक किया श्रीलंका ने। पेट्रोग्लो जो बड़े तजर्बाकार यूनानी कोच हैं वो श्रीलंका, और ये आप देख रहे हैं नेपाल के कोच को, प्रसाद भाटिया। बड़ी टेंशन बढ़ जाती है कोचेस में। अच्छा तालमेल, क्विक एक्शन अटैक सुनील की जानिब से। नेपाल 2 श्रीलंका 1। ये रिप्ले में आप देखिए, बहुत अच्छा तालमेल, नेट के बिल्कुल करीब जब बॉल सेटर प्लेस करता है। तो ये आप पेट्रियस को देख रहे हैं, इस बारे में बात करते हैं। बड़े 5 ममालिक में ये कोचिंग कर चुके हैं। बहुत उम्दा दफा, मगर डिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर गई। और यूनान की तारीख तो आप जानते हैं, सुकरात और अफलातून और सिकंदर आजम दुनिया को दिए, मगर उससे बढ़ के स्पोर्ट्स हिस्ट्री बड़ी जबरदस्त है। 2500 साल पहले नोमान यूनान की सरजमीन से कदीम ओलंपिक्स ने जन्म लिया। 11 सदियों तक वो कदीम ओलंपिक्स जारी रहे। ये इस पॉइंट के बाद बात करते हैं। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, श्रीलंका ने बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ये पॉइंट लिया। 1100 साल जारी रहने के बाद कदीम ओलंपिक्स खत्म हुए, तो फिर 1504 साल बाद उनका अहया हुआ 1896 से, और यूनान से ही, और उसी स्टेडियम से जहां 1500 साल पहले वो खत्म हुए थे। तो ये तारीख है। और पेरी डी कोबर्टन जो जदीद ओलंपिक के बानी हैं, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छा तालमेल, इस बार नेपाल ने कहा, कॉम्प्लीमेंट्स रिटर्न किए। पेरी डी कोबर्टन जो मॉडर्न ओलंपिक्स के बानी हैं, लुज़ैन में उनका इंतकाल हुआ था, मगर उन्होंने कहा था कि मेरा जिस्म लुज़ैन में और मेरा दिल ओलंपिया में दफन किया जाए। तो उनका दिल जो है अलामती तौर पर ओलंपिया में दफन है। ये है हिस्ट्री यूनान की। बहुत उम्दा पहल की कोशिश, ओ बहुत उम्दा, ऑल आउट जा रही है, टिट फॉर टैट। शानदार खेल का मुजाहिरा दोनों टीम्स की जानिब से। 2-2 से ओवरऑल गेम बराबर है। 4-3, 1 पॉइंट की बढ़तरी श्रीलंका के पास है। बहुत उम्दा रैली। दोनों टीमों की फिटनेस और उनके टेम्परामेंट का इम्तिहान है इस 5 सेटर में। नेपाल की टीम टूर्नामेंट में अपना दूसरा मैच खेल रही है और दूसरा ही 5 सेटर खेल रही है। इस तरह मोहम्मद तौफीक साहब हमें पहले बता रहे थे कि तकरीबन 7 खिलाड़ी ऐसे हैं नेपाल के स्क्वाड में जो पहली मर्तबा इंटरनेशनल टूर जो है वो कर रहे हैं। और अगर आप इन तमाम तर चीजों को कंसिडर करें तो बहुत स्पिरिटेड परफॉर्मेंस कहेंगे आप नेपाल के इस यूनिट की। 4 ईच इन द डिसाइडिंग सेट। चांस है श्रीलंका के पास, बॉल क्रॉस होगी, नेपाल के पास मौका है। बहुत ही उम्दा डाउन द लाइन, टच बॉल करवाने में कामयाब रहे हैं और अब नेपाल की टीम 1 पॉइंट आगे है श्रीलंका से। नेपाल की टीम की क़ियादत कर रहे हैं हरी हजूर थापा। ये रिप्ले आप देख रहे हैं। और दूसरी जानिब हीरो श्वाम क़ियादत कर रहे हैं श्रीलंका। श्रीलंका की टीम एशियाई रैंकिंग में 17 नंबर की टीम है और उसको मुश्किलात में डाल रखा है उससे कहीं कम दर्जे के नेपाल ने। अगर सपोर्टिंग नेशन है, आपको बताया 5-5 से ये आप उनके हेड कोच प्रसाद भाटिया को आपने देखा। और ये देखिए सेंटर ऑफ द कोर्ट, थोड़ी से हैवी लेग लग रही है श्रीलंका।
की टीम के खिलाड़ी। फिटनेस लेवल मुझे नेपाल का बेहतर नजर आया, क्योंकि वो वजन में भी उनके खिलाड़ी कम दिखाई देते हैं और उनकी मूवमेंट में अभी भी एजिलिटी बाकी है। ये एक एस सर्विस की कोशिश जो कोर्ट से बाहर गई। कन्वेंशनल वॉलीबॉल का भरपूर मुजाहरा किया नेपाल की इस टीम ने, अगरचे वो इतने ज्यादा दराज कद नहीं है, एवरेज हाइट में भी दोनों टीमों का खातिर खां फर्क है, लेकिन उन्होंने कन्वेंशनल वॉलीबॉल पर ज्यादा फोकस किया। एस सर्व की तरफ वो नहीं गए, उन्होंने रिस्क बहुत कम लिए, लेकिन टेम्परामेंट बहुत बेहतरीन शो किया है। नेपाल की टीम ने अपील कर रही है श्रीलंकन टीम, और देखना ये होगा कि क्या उनकी अपील पर मजीद डिस्कशन चल रही है इस पॉइंट के लिए। ऑफिशियल टेबल 8 ऑफिशियल पे मुश्तमिल ज्यूरी रेफर करती है मैं हर मैच को। बहुत उम्दा फिंगर टिप स्टफ, अच्छा दिफा, सुनील का शॉट ज्यादा इसमें वेनम और बाइट नहीं थी, ऐसे शॉट लगाते हैं श्रीलंका ने बताया। टच बॉल खिलाया 6-7। ये जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी हैं, ये सुनहरी आप कोर्ट में देख रहे हैं, क्लोज 5th सेट। और नुमाया खसूसियत इस चैंपियनशिप की कि जो पाकिस्तान के मैच के अलावा तमाम जो 3 मैच हैं वो 5 सेटर हुए हैं। लॉब सर्व सुनील का बहुत अच्छा स्पाइक। इसमें आपको अगर रिप्ले में हम दिखाएंगे कि ब्लॉकर के रीच के बहुत से ऊपर चले गए, कोई मौका नहीं था। 7-7 से ये 5वां, ये देखिए ब्लॉकर मौजूद थे मगर उनकी रेंज और रेंज से ऊपर जाकर स्पाइक किया। 7 ईच। हमारे मेन स्पॉन्सर्स कौन से हैं? उम्दा टच बॉल, ब्रूट फोर्स नहीं थी, सिल्की टच नेपाल की जानिब से। और क्योंकि 8 पॉइंट हो चुके थे नेपाल की, तो कोर्ट चेंज किया जा रहा है ताकि दोनों टीमों को साइड का इक्वल एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो। बहुत खूबसूरत गुलदस्ता तश्कील दिया है पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने शायकीन वॉलीबॉल के लिए, और इस गुलदस्ते के जो नुमाया फूल हैं उसमें जोंग 5G, इसके अलावा वीगोटेल, और जाहिर है प्रोडक्शन पार्टनर्स में TPT, ब्रॉडकास्टर पार्टनर हैं PTV स्पोर्ट्स और टैप मैट। तो ये तमाम हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स हैं। बहुत उम्दा श्रीलंका ने एक और पॉइंट हासिल किया। और जब हम इस चैंपियनशिप के प्राउड स्पॉन्सर्स की बात करते हैं तो जोंग 5G, वीगोटेल, बैंकल फला, बाटा, इकोस्टार और उसके अलावा लेज और पेप्सी हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर supporting sports cause in Pakistan. Proud sponsors of Kawa, और जाहिर है above all production partner TPT। 8-8 बराबर। बहुत अच्छा, सेटर ने बिल्कुल बॉल नेट पर ऐसा जमा कर दिया था, पीस ऑफ केक। और ये पैट्रिग्लो, यह दोनों टीम्स के लिए ऐसी सूरत हाल में मैच लेकर आकर हार किसी सूरत भी जो है वो आसान नहीं होगा उस हार को कबूल करना, क्योंकि 2-2 से आप सेट बराबर करें और 5th सेट भी ऐसी सिचुएशन में हो। चांस है नेपाल के पास, बहुत वाइटल पॉइंट हो सकता है नेपाल के लिए, लेकिन टच बॉल करवाने में कामयाब नहीं हो पाए नेपाल के खिलाड़ी। 9 ईच
What an absolute thriller. अगर ये मुकाबला नेपाल जीत जाती है तो फिर रफीक साहब हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अपसेट होगा ये। जी हाँ, इस लिहाज से कि श्रीलंका की रैंकिंग बहुत उम्दा है, 17 नंबर पे हैं, मगर लास्ट ड्रॉप ऑफ एनर्जीज दोनों टीमें अब काम में ला रही हैं। बहुत अच्छी सर्विस थी और उसका बहुत भरपूर फायदा उठाया। हम बार बार बता रहे हैं, जब आप एक स्पाइक सर्व करते हैं तो उससे मुखालिफ टीम का जो दिफा है वो तितर बितर होता है, कमजोर रिटर्न आता है, और यही आपने इस मौके पे देखा। ये रिप्ले में देखिए, स्पाइक सर्व थी, नेट पे कमजोर रिटर्न, और थैंक यू वेरी मच कहा श्रीलंका ने। वीगोटेल टाइम आउट। मैच ऑन अ नाइफ एज, 10 श्रीलंका 9 नेपाल। ये अब टैलेंट से ज्यादा टेम्परामेंट की जंग है, आसाब की जंग है। ये पैट्रियस पैट्रग्लो, बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा होगा। सर्विस, स्पाइक सर्व, अच्छा दिफा श्रीलंका का। दोबारा मौका मिलेगा नेपाल को, उसी एंगल से खेले हैं और बाहर खेल गए हैं, तो 2 पॉइंट की बड़ी वाइटल लीड। प्रेशर में चोक होते हुए दिखाई दे रही है नेपाल की टीम, जिस तरह हमने कल इन्हें काजाकिस्तान के अगेंस्ट 5th सेटर मुकाबले में देखा। ये रिप्ले में देखिए, डाउन द लाइन खेलना चाहते थे, बॉल वसीम अकरम की बॉल की तरह बनाना स्विंग लेती हुई साइड लाइन से बाहर चली गई। नुमान नौजवान है, फौरन फैसले पे पहुंच जाते हैं। मेरी जान, अभी बहुत कुछ बाकी है इस मैच में। टू अर्ली टू कमिट। ओ अंडरलाइन शॉट, और बहुत सोचने के बाद लाइन जज से निगाहों में बातचीत करने के बाद आउट दिया। सो नियर येट सो फार, बड़ा करीबी मामला था। सब्स्टिट्यूशन श्रीलंका, 14 नंबर के खिलाड़ी बाहर आए हैं, 10 नंबर के खेलने के लिए आए। 1 पॉइंट का वेफर थिन डिफरेंस है दोनों टीमों में। 11 नंबर की जर्सी में नेपाल के लिए लॉब सर्व, रिसेप्शन, सेटिंग और बहुत उम्दा टच बॉल खिलाया। लीड को 2 पॉइंट तक बढ़ाया श्रीलंका ने। कोशिश जरूर कर रही है नेपालीज टीम। इससे पहले उन्हें एक लकी एस्केप मिला जब एस पॉइंट की कोशिश में बैक कोर्ट से बाहर खेल गए, लेकिन अब ये जो रैली है ये बड़ी वाइटल साबित होगी इस मुकाबले के लिए, क्योंकि 2 पॉइंट्स ऑलरेडी आगे है श्रीलंका। श्रीलंका की जानिब से डाउन द लाइन सर्विस, बॉल ड्रॉप करने की कोशिश, चांस मिलेगा श्रीलंका को। बैक रो अटैक, लिबरो ने उम्दा दिफा किया नेपाल का, और कोर्ट से बाहर खेल गए। वो जो शायर ने कहा कि हम जिंदगी की जंग हारे जरूर हैं, लेकिन किसी महाज से पसपा नहीं हुए। हार जीत किसी भी टीम की हो, जीती वॉलीबॉल है। जिस म्यार का खेल देखने को मिला है, ये बैक कोर्ट से बाहर खेल गए। बहुत फैसला कौन लीड अब श्रीलंका के पास, और फौरी तौर पे वीगोटेल टाइम आउट। वेलकम बैक। श्रीलंका 13, नेपाल 10। 5वां फैसला कुन डिसाइडर सेट। लॉब सर्व, अच्छा ब्लॉक, चांस मिलेगा श्रीलंका को।
और श्रीलंका ने जाया नहीं किया, सीधा नेपाल के लिब्रो की बॉडी पे खेले हैं और मैच पॉइंट पर पहुंचे 14-10। ये देखिए लिब्रो की, ये देखें बॉडी पे खेले। सब्स्टिट्यूशन की जा रही है, 4 नंबर के खिलाड़ी को बाहर बुलाया गया और अमानता 6 नंबर की शर्ट में श्रीलंका की जानब से इंट्रोड्यूस करवाए गए। सेट पॉइंट, मैच पॉइंट श्रीलंका के लिए 14-10। लॉब सर्व, बॉल ड्रॉप करने की कोशिश, चांस मिल गया श्रीलंका को। श्रीलंका ने कहा थैंक यू वेरी मच 15-10 से। और नौमान भाई आप बताइए मैच की प्रेडिक्शन के बारे में। बहुत शानदार कारकर्दगी, श्रीलंका ने एक सेट डाउन होने के बावजूद उम्दा कमबैक किया और आखिर में ऐसा लग रहा है कि जो प्रेशर था, बड़े मैच का जो प्रेशर था क्राइसिस सिचुएशन में परफॉर्म करने का, इट गॉट टू हेवी ऑन नेपाल, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त दिखाई है। बैक टू बैक 5 सेटर खेलने में कामयाब रही नेपाल की टीम। डाउन बट डेफिनेटली दे वॉन द हार्ट्स ऑफ नेपालीज फैंस। ये श्रीलंकन जो तमाशाई हैं, दे आर जुबिलेंट, वेविंग देयर नेशनल फ्लैग एंड व्हाई नॉट। 5 सेट मैराथन थ्रिलर के बाद शेयर करने में कामयाब हुई उनकी टीम नेपाल को, और कस्टमरी हैंडशेक है। और जैसे हम बार बार कहते हैं, स्पोर्ट्स का मैदान वो जगह है जो इंसान को तासुबात से ऊपर ले जाता है और ये सबक देता है कि किसी को गिराना खेल का मकसद नहीं है, बल्कि गिरे हुए को उठाना और साथ देख के चलना। नौमान, बैंक अल्फला हाइलाइट्स आपको मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि किस जबरदस्त तरीके से ये 5 सेटर पैन आउट हुआ। पहला सेट श्रीलंका ने अपने नाम किया और उसके बाद तवातुर से 2 सेट जीतने में कामयाब रही नेपालीज टीम। फाइनल सेट के आखिरी 5 पॉइंट्स पे दरपे हासिल किए श्रीलंका ने और वो 5 पॉइंट्स जीतकर इस जोंग 5G काबा मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप